Friday morning, and the national capital was abuzz as a road in Lutyens, Delhi got a new name. Although it hasn't happened officially yet, but two members of parliament of the BJP decided to modify their own official address. Dinesh Sharma and Kishan Pal Gujar, both of them stay in Lutyens, Delhi. Their residences are located on Tughlaq Lane, but take a look at their nameplates. They have decided unilaterally to change the name of their address. It's not Tughlaq Lane anymore. It is Swami Vivekanand Marg. It is written in prominent font. However, the lawmakers claim this change isn't official. It's just the will of the people. जब मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पे नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी। ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। So just to be clear, for anyone who's thinking that the name of Tughlaq and Aurangzeb and Babur is going to be removed entirely from India and any road sign, this is just symbolic. This road, by the way, falls in the Lutyens zone. Civic body NDMC is the only one that has jurisdiction over all of these roads in central Delhi. The rules for renaming are very clear. It is that suggestions can only come from registered entities and not from any single person. The road should be named possibly in the area where the particular dignitary resided. So, for example, if somebody needs to change the name of a road to APJ Abdul Kalam Road, ideally it should be in the region where Kalam Saab stayed. The rules also say that renaming requests should take into account history, sentiment, and whether a personality needs to be acknowledged in that particular fashion. Now, one road's name may have been changed symbolically, but it's going to be quite a tall task if we really want to remove any sign of Aurangzeb, Tughlaq, and Babur from our roads. As per the last census, at least 704 cities and towns carry the name of the first 6 Mughal emperors. Uttar Pradesh has the highest with 392 cities and towns. We are not just talking about roads, entire cities bear the name of these Mughal emperors. There are 392 in Uttar Pradesh. There are 97 in Bihar. Remember, there was a big furor about Muzaffarabad, Muzaffarnagar, that these names should be changed. 50 in Rajasthan, 38 in Haryana, 27 in Punjab, and 20 in Rajasthan. So close to 1,000 cities across India bear the name of Mughal emperors. Let's start working on that now. Clearly, it's not just the monuments, the most visible legacy of the Mughal rule in various towns and villages across India that carry their memory. A further deep dive into these numbers show that Akbar is the emperor who carries the deepest imprint. 251 cities, towns, and villages across our country are named after him. He is followed by, guess who? By Aurangzeb, the despot who is in the news right now. Aurangzeb has a mammoth 177 places named after him. There are close to 70 Akbarpurs across the country, followed by 63 Aurangabads. Jahangir comes in at 3rd position. He has 141 places named after him. And then there is Shah Jahan, relatively a more benevolent emperor. He has only 63 cities, towns, places named after him. And this is followed by Babur, who gets 61, and Humayun at a paltry 11. अगर कुछ करना है तो हालात बदल करके नाम ऊंचा करें ना। हालात बदलना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता।
लेकिन बीजेपी का एजेंडा है, इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। हिंदू मुस्लिम करना है, तरक्की करके शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बदलाव करके कुछ करके दिखाएं। और नाम बदलने से क्या होता है? अच्छी बात है, रख लिया है। इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहाँ बिल्डिंग बना हुआ। किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा उड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। We know that they're changing the name. The way the BJP is going, tomorrow they can instruct to change your name of their father because he is old. The way they're moving. Every day they're changing. But the question is, there some minimum rules should be maintained. Suppose municipality is there, corporation is there, or state is there. There some procedure should be there. They should discuss the matter. They'll decide it. Anybody individual cannot change the name of the road in front of his house. नहीं, कृष्णपाल जी हो या दिनेश जी हो, और तो कुछ आता नहीं। नाम बदल सकते हो। अब व्यक्तिगत तौर पर भी नाम, पहले तो सुना सरकारें नाम बदला करती थी। उसमें यूपी के सीएम साहब को महारत हासिल थी, उनका काम भी ले रहे हैं आप ही लोग। बड़ा कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में भाई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तुगलक, बाबर, औरंगजेब और फलाना ढिमकाना आपको कब तक मदद कर पाएंगे अपनी असफलताओं को छुपाने में। By the way, this is not the first time that such renaming incidents have made headlines. In 2015, Aurangzeb Road in Delhi was renamed after Dr. APJ Abdul Kalam. After winning elections, BJP leaders have demanded that various areas of Delhi, including Najafgarh, be changed to Nahargarh, Mustafabad should be changed to Shivpuri. But the big question is this dressing the past anew or reclaiming history?